Hello everyone, welcome to our channel The Noble Trading. I am Urvana Kapur, your trading psychologist and a performance coach. Before I begin this video, मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ. That is, do you really think trading is all about technical and fundamental analysis and nothing else? एज अ ट्रेडर आप सबने सुना होगा टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग. कईयों ने तो सीखी भी होंगी ये सारी टेक्निक्स, ऑल द एनालिसिस दैट वी डू एज ट्रेडर्स. बट there are a lot of people who have mastered these two skills but are still facing losses. Have you ever thought what is the reason behind it? The only reason behind it that there is a third wheel to this system, which we call the trading psychology. Let's look at it from this perspective. Fundamentals might tell you what to trade. For an example, आप न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर दिन कौन से स्टॉक के अंदर मोमेंटम ज़्यादा आएगा. सो यू विल चूज दैट स्टॉक फॉर दैट पर्टिकुलर डे. So this is how you decide what to trade. It can be a stock, a currency, or a coin. Similarly, technical analysis might tell you when to trade. You might have decided which stock to trade in, but there is a particular time to get into that trade, right? So technicals like support, resistance, trend line, or indicators, these might tell you exactly when to enter the trade. You will hear Mr. Paras Goel discussing about these technicals and the fundamentals of trading in this channel as well. You may have come across a lot of teachers and instructors and trainers training you in these two skills. But the most important thing about trading is the trading psychology, because that is something that decides how you will trade. आपके लॉसेस होंगे या प्रॉफिट्स होंगे, ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है, सिर्फ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स नहीं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न एग्जैक्टली what your mindset is, how your emotions are controlling your decisions. So even if you have mastered both the technicals and the fundamentals of trading, still your mindset and emotions will decide how much profits and losses you realize at the end of the day. There are a lot of market experts that believe that technicals and the fundamentals only contribute 5% of success in trading. 95% constitutes of your trading psychology, your risk management, and the discipline with which you follow these rules. So now the question arises, trading psychology hoti kya hai? What is trading psychology? Trading psychology refers to the emotions and the mindset of the trader and the market that helps to dictate success and failure in trading. ट्रेडिंग माइंडसेट ही आपका डिसाइड करेगा कि आप ट्रेड में सक्सेसफुल होते हो या आप उसमें फेल करते हो. आपके इमोशंस आपको ट्रिगर करेंगे और आपके इमोशंस आपको गलत डिसीजन लेने पे भी मजबूर करेंगे. And that is how you actually take losses. There are a lot of times that traders feel these emotions, but they are not able to recognize it. And that is why I, as a trading psychologist, come in the picture, where I will help you understand these emotions and also how to control them and not let that emotion affect your decisions. Now let's talk about the emotions. There are a lot of major and minor emotions that a trader can experience at a particular point. The most important thing is first to understand these emotions. What are these and how they trigger you during those trading sessions? And secondly, the most important thing is to control these emotions from affecting your trading decisions. सबसे पहले ज़रूरी है हमें समझना कि क्या हैं वो इमोशंस, एंड सेकेंडली हम ये समझेंगे कि हम उन इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. सो हियर आर अ फ्यू इमोशंस दैट एवरी ट्रेडर एक्सपीरियंसेस. Like greed, when you try to achieve more profits than you actually should according to your rules. Fear can be triggered at a lot of moments. किसी भी ट्रेड को एंटर करने का भी फेयर हो सकता है, उसे एग्जिट करने पे भी फेयर इमोशन ट्रिगर हो सकता है. ईगो, that I am correct and the market will get back to where I was willing it to be. Regret of not entering a particular trade, or regret of even entering a wrong trade. Hope that the price will still go to the level that you had wished it to go for, even if it is showing negative signs in the market. FOMO, that is fear of missing out. This is an emotion that is mostly felt by investors
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एज वेल। फोमो आपको तब इफेक्ट करता है जब मार्केट में बहुत किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बहुत न्यूज़ आ रहा होता है एंड यू एंटर एट द रॉन्ग मोमेंट, जब वो एक्चुअली मोमेंटम ले चुका होता है सारा बाइंग का और सेलिंग का। सो दिस इज द फोमो इमोशन दैट ट्रिगर्स। Then is admiration. There are some moments when you get admired by a particular stock or a currency and you stick to that currency even if the market and the technicals are telling you otherwise. These are the major emotions, but इतनी सी instructions से आपको इन emotions के बारे में ढंग से समझ नहीं आया होगा. I just gave you a gist of the description of these emotions, but there are a lot of things into it. So I am coming with a new YouTube series where I will be discussing about these emotions in particular. It will be called Emotions While Trading. In this series, I'll be taking a particular emotion in every video and explain to you in detail about that emotion, about what it is, how to control it, how to manage it, and how to overcome it from affecting your trading decisions. So please hit the bell icon and then subscribe to this channel so that you get regular updates with the upcoming videos of this series. Now let us discuss about the content that will be covered in these videos and why exactly you should watch them. Firstly, I will be discussing about the particular emotion and its psychological background. We all are aware about these emotions as I've already discussed. But what it is important to know how exactly these emotions originate and what they actually mean while trading. So I will be discussing about what these emotions are in detail in these videos. Secondly, I'll be taking different scenarios in which these emotions can be triggered while trading. हर ट्रेडर हर सिचुएशन में डिफरेंट इमोशंस को फील करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा इमोशन इफेक्ट कर रहा है. सो आई विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट सिनेरियोज फॉर एवरी इमोशन कि एग्जैक्टली किस सिनेरियो में वो इमोशन ट्रिगर हो रहा है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नोटिस दैट इमोशन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. Thirdly, I'll be sharing a few successful ways in which you can identify these emotions and these scenarios by your own self at a personal level. हर ट्रेडर अलग इमोशन अलग मोमेंट पे फील करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई एट योर ओन पर्सनल लेवल. आप अपने लेवल पे भी समझ सको कि ये कौन सा इमोशन है, क्या ये कौन सा सिनेरियो है और इस सिनेरियो पे कौन सा इमोशन मुझे इफेक्ट कर सकता है. Lastly and most importantly, I will provide you a lot of recommendations on how exactly you can control and overcome these emotions and how can you become a successful trader who doesn't let their emotions affect their trading decisions. So, सबसे पहले मैं उन emotions के बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि वो क्या होते हैं और उनका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है हम पे, वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं और उनके होने से ट्रेडिंग करते में हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है. सेकेंडली, मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करूँगी जिसके अंदर वो पर्टिकुलर इमोशन आपको इफ़ेक्ट कर सकता है या आपको करता होगा. इन सिनेरियोज को डिस्कस करके आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने भी वो पर्टिकुलर सिनेरियोज फील करे होंगे अपने पर्सनल लेवल पे जब आप ट्रेडिंग कर रहे थे. सो दिस विल बी अ वे जिससे आप अपने आप उन सिचुएशंस को रिलेट कर पाओगे. थर्डली, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि इन इमोशंस को और इन सिनेरियोज को आप अपने पर्सनल लेवल पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हर इंसान अलग होता है. मैं आपको मेजर इमोशंस के बारे में तो बता दूंगी, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ माइनर इमोशंस दैट आई विल बी डिस्कसिंग, बट उनके पर्टिकुलर्स आप अपने पर्सनल लेवल पे ही समझ सकते हैं. तो मैं वो तरीके भी बताऊंगी जिससे आप अपने पर्सनल इमोशंस को समझ सकें और उन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं आपको तरीके भी बताऊंगी जिनसे इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करके आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इन्हें ओवरकम कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के बीच में नहीं आने देंगे. बिकॉज दिस इज़ दी ओनली वे जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं. आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के रूल बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं और अच्छी ट्रेडिंग और सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं. ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि किसे ज़रूरत होती है एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की या इन इमोशंस को समझने की. सो लेट मी टेल यू, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत हर एक
ट्रेडर को है, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर सिस्टम के अंदर टेक्निकल्स अलग हो सकते हैं, हर सिस्टम में फंडामेंटल्स भी अलग होंगे, पर हर सिस्टम में ट्रेडिंग साइकोलॉजी कॉमन रहेगा। Also, you may be just a beginner in trading or an experienced trader as well. But trading psychology आपको हर स्टेज पर ज़रूरी है. As a beginner, it's very good for you to learn trading psychology because आप वो mistakes नहीं करेंगे जो आपके trainers और आपके seniors ने करी होगी because they didn't have control over their emotions. You will have that upper hand even from the beginning if you start learning what is trading psychology. And even as an experienced trader, you might have missed a lot of opportunities or entered the wrong trades because of your emotions. So, to become more effective and earn more profits, it's important for you as an experienced trader as well to understand these emotions. So, the series that we are coming up, that is the emotions of trading, is important for every person from any market you're trading in or at any level of trading you are. You can be a swing trader, you can be an intraday trader, you can be a long term investor as well, because there are a few emotions like FOMO or greed that we will be discussing that are only for investors as well, that are affecting investors mostly. सो चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हों अपनी ट्रेडिंग करियर के, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सेशंस लेना ज़रूरी है, ताकि आप इन सेशंस को देखेंगे, इन इमोशंस को समझेंगे, तो आप अपनी ट्रेडिंग पे खुद इफ़ेक्ट देखेंगे, कितना इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, और आप कितने सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप इन इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. With this, we come to the end of the session. I will request you to subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get regular updates about whenever these videos are uploaded. I'll be uploading every emotional video at regular intervals so that you are able to understand them better and also implement in them in the live market. Thank you for watching and do subscribe to get updates.